ओम शांति। ये 21 जनवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार है। इस सप्ताह की मुरली का टॉपिक्स योगी बनने पर है। बाबा ने सोमवार की मुरली से चालू किया है कि बच्चे आप भक्तों से भी सीखो। ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान से पहले भी देखा था कि कई सन्यासी हैं जो कभी भीख नहीं मांगते हैं, बस ऐसे ऋषि मुनि और धर्मों में भी ऐसे मंक्स नन्स होते हैं जिसको बस अपना भगवान में ही ध्यान है। वो कोई संस्था नहीं बनाते हैं, गृहस्थी जीवन में इंटरेस्ट नहीं होता है, पैसा बनाने में, अपना नाम फैलाने में, इन बातों की इंटरेस्ट नहीं होती है। बस जो भी अपना भगवान होता है उसको ही याद करते हैं, समझते हैं कि मेरी साधना से ही मुझे सब कुछ मिलेगा। तो अपनी साधना में ही मस्त रहते हैं। तो ऐसे सिंपल लाइफ और साधना, तो इससे सब विकारों का त्याग करते हैं। तो उन्हों की त्याग से पवित्रता पैदा होती है। तो वो पवित्रता फिर दूसरों को भी आकर्षित करते हैं। ये एक ड्रामा का नियम होता है। तो प्रकृति भी उनको सहयोग देते हैं और बाबा किसी न किसी को टच करेंगे सहयोगी बनने का, तो उनके पास भोजन पहुंच जाएगा अथवा कोई न कोई जो भी आवश्यक चीज़ है वो अपने आप पहुंच जाता है। तो ऐसे ऋषि लोग भी थे, ऐसे भी। तो अपना बस साधना का गर्व होता है। गृहस्थी जीवन में हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत भरोसा रखना पड़ता है। संबंधों का भरोसा, प्रॉपर्टी का भरोसा, संपत्ति का भरोसा, पोजीशन का भरोसा, जॉब का भरोसा, समाज का भरोसा, कोई न कोई अचीवमेंट्स। तो हमारा सारा स्वमान का आधार ये अनेक बातें होती हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है। इन किसी बातों में कोई भी हलचल होंगी ना, तो अंदर मानसिक स्थिति हलचल में आएगा। तो ये गृहस्थी जीवन भोगी जीवन है, अधीन जीवन है। और बाबा अभी हम सबको प्रेरणा दे रहा है कि बच्चे तुम योगी बनो। योगी माना एक बल एक भरोसा। आप ये सब सहारे से अपने दिल को हटाते चलो और एक बाप में अपना योग का अवस्था बढ़ाते चलो। तो फिर क्या होगा कि आपकी दिल ट्रांसफर होती जाएंगी यहाँ से ऊपर। तो फिर क्या योग से नहीं हो सकता है? यदि भगत को सब जो चाहे मिल सकता, तो आप ज्ञानी जो यथार्थ विधि से शिव बाबा को याद करते हो, आपको क्या नहीं मिल सकता है? तो ज़रूर आपका आवश्यकता सब आप अपने आप पहुंच ही जाएंगे। तो बाबा समझाते हैं कि ऐसी अवस्था बनानी है। ब्रह्मा बाबा दादिया आदि कराची में कंफर्टेबल रहते थे, वहाँ 5-6 बंगलेस थे। परंतु फिर जब माउंट आबू आए और सेंटर स्थापना किया, तो उस समय बहुत सिंपल रहते थे। तो बाबा सबको सिखा रहा था कि तुमको किसी बात की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा तो अपनी संदली का बैक सपोर्ट भी नहीं रखता था, ऐसे बाबा में गर्व था। और अव्यक्त बाप दादा भी नहीं रखता था। दादी की आयु जब बहुत बढ़ गई तब भी कुर्सी रखी, बाकी तो कोई सपोर्ट ही नहीं भी। बाप दादा का ये था। और हिस्ट्री हॉल में नीचे ही पट पर बैठना होता था
और सबको सीधा ही बैठना होता था। ऐसे बाबा सिखाता था कि कोई सपोर्ट का जैसे आदत ना बन जाए। कंफर्टेबल हम बन जाते हैं ना, तो फिर छोड़ना मुश्किल, उसके बिना ही हम नहीं रह सकते। तो बाबा सिखा रहा है कि कैसे योग से सब कुछ हमें अंदर प्रसन्न करना है। योग बल से विकारों का जो नशा है उसको ठंडा कर देना है, विकारों को भी वश में लाना है, कर्मेंद्रियों को भी वश में लाना है। ये दोनों बात करेंगे तो फिर प्रकृति भी हमें सहयोग देते रहेंगी और फिर ड्रामा भी बहुत सहयोग देंगे। बाबा क्यों यह सब कुछ, सब पुरुषार्थ हमसे करवा रहा है? क्योंकि नाजुक समय आने वाला है। तो जिस समय क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लड़ाई चालू हो गई है, सिविल वॉर चालू हो गई है, तो उस समय ये सब सपोर्ट्स खलास होने वाला ही है और बहुत जल्दी खलास होते हैं। ये तो समय भी नहीं लगता है। और देखो हद में भी एक दिवस तो ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये शायद मृत्यु का समय तो नजदीक है, विनाश का बाद में हो सकता है। तो ये भी एक छोटा विनाश हो जाता है ना जब आत्मा शरीर छोड़ती है। तो जिसका आधार लिया वो कुछ लेके जाती है आत्मा। तो बाबा कह रहा है कि अभी से अभ्यास करो, अब एवर रेडी बनो। तो फिर जिस समय नाजुक परिस्थिति आती है, आप महावीर स्थिर स्थिति, स्थिरियम जिसको बाबा कहते हैं, तो महावीर बाबा उसको कहा कहता है कि जिसकी फीलिंग्स में कोई हलचल ना आवे। समझो बड़ी बड़ी परिस्थिति आती है, उसमें बस अंदर की अवस्था शांत, शीतल, आनंदमय। तो अभी से योग बल जमा करना पड़ेगा। मम्मा पापा ने बहुत योग बल जमा किया, तो बस एक बल, एक भरोसा की अवस्था थी, कुछ नहीं चाहिए किसी से। तो ये अवस्था हम सबको बनानी है। बाबा ने मंगलवार के भोग संदेश में भी कहा था कि देखो ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त अवस्था वो अति आवश्यक थी आप सब बच्चों को प्राप्ति दिलवाने के लिए और सर्व आत्माओं को प्राप्ति दिलवाने के लिए। आज का वरदान में भी बाबा समझा रहा है कि बच्चे तुम्हें भी बाप समान बनना है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का बहुत प्योर फीलिंग्स हैं सर्व के प्रति। तो उन्हों का प्योर फीलिंग्स होने के कारण हम सब की फीलिंग्स बदल रही है ना। तो बाबा कह रहा है आपको ये सेवा दूसरों के प्रति भी करनी है। आप अंदर देखो आप कौन सी मिक्स्ड फीलिंग्स रख रहे हो। तो जब तक ये मिक्स फीलिंग्स है किसी के प्रति, स्वयं के प्रति, पास के प्रति, कोई कार्य के प्रति, जो भी मिक्स फीलिंग्स है, जब तक हम अंदर दिल में रख रहे हैं तब तक हम ना बदलेंगे ना वो बदलेंगे। हमें अपनी फीलिंग्स को बहुत प्योर बनानी है योग बल से और ज्ञान बल से। तो फिर वो वाइब्रेशन दूसरों का फीलिंग्स का परिवर्तन करेगा। जब तक ये फीलिंग्स का चेंज नहीं हुआ है तब तक वृत्ति भी नहीं बदलेंगी और संस्कार भी नहीं बदलेंगे। और फिर बाबा सेवा का मोटिवेशन देता रहता है। जब दादी जानकी ने ये मुरली लंदन क्लास में पढ़ी थी बहुत वर्ष पहले, तो दादी ने समझाया था कि बाबा ने 12 पिक्चर्स का किट पैक बनाया था। तो उस 12 पिक्चर्स का 12 रुपया का कॉस्ट था। तो बाबा ने कहा था कि ये सब सहज सबको भेज सकते हैं। तो दादी उस समय
जो सेंटर चलाती थी बहुत सिंपल था, तो जो भंडारा में आता था स्टूडेंट्स से, बस बेसिक जो रेंट कॉस्ट जो थे उससे जस्ट अबाउट भरता था। तो दादी के पास यह 12 रुपया था ही नहीं पिक्चर्स के लिए, परंतु दादी हंसती थी कि बाबा का ये पर्सनालिटी था कि कहेंगा कि बस मफत में भेजूंगा, परंतु बाबा से कोई मफत चीज़ मिलती ही नहीं। फल बाबा कहता है कि बच्चों का ही भेज, बस बाबा ही भेजता है, निश्चिंत रहो। परंतु एक बारी बाबा ने कुछ मफत में दिया तो बाबा कभी भूलेंगे ही नहीं कि मफत में दिया, पूछता ही रहेगा उसके बारे में। तो दादी लेने नहीं चाहते थे बाबा से, तो फिर बाबा ने दादी से एक बारी पूछा कि बच्ची तुम्हारे पास ये किट बैग आई है? तो दादी ने ना कहा। तो बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं है, बाबा भेजता है। तो दादी लेने नहीं चाहती थी, परंतु बाबा ने ही भेज। तो फिर क्या हुआ, हर पत्र में बाबा क्या पूछ रहा है, बच्ची इस किट बैग का क्या हुआ, सेवा करती हो ना, बाबा ने तो तुमको मुफ्त में ही भेजा। सेवा का कितनों को समझाया है, कौन आता है, किसने ज्ञान लिया है, बच्ची बाबा ने तो मुफ्त में भेजा, तुम बैठी तो नहीं रहती हो ना। तो दादी ऐसे हंसती थी। Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 21st of January 2022. The main theme this week in the Murlis has been developing our yoga power. Baba started the week on Monday recounting how he had seen sannyasis who just had the pride of their spiritual endeavor. They felt that their remembrance of the great element of light, or whatever deity they remembered, was sufficient for them. They would not need any extra facilities, any people, any relationships, any positions, but they were renouncing the vices very powerfully. And around the world, in all the different faiths, there must be devotees like that. And what Baba is explaining is that as a soul moves away from all those other supports of the world and takes the support of one, even if it's indirectly, it's not through the understanding of Shiv Baba, it's worshipping their own particular God. But there's a renunciation of the vices as well through that. That purity attracts cooperation. It's a law within the drama. And so the elements of nature cooperate, and also Baba would help that soul and probably touch soul's intellects to help that soul. And that soul would get whatever they need. And Baba has a great deal of love for such yogis in bhakti. And Baba is now teaching us to develop that stage too. As human beings, we need so many things to support our physical and mental health. Yesterday Baba was talking about hobbies, but if you think whether it's food and drink, or accommodation, or cars, or relations and connections and activities and possessions and wealth and positions and achievements. The list goes on, doesn't it, of all the things that support our self-esteem. And Baba's saying you're going to now have to become yogis. And yogis only have one strength and one support. So you have to replace all those things with
so that you, with developing such power of yoga, so that your emotional state is totally supported by yoga rather than anything else. And it's this transition that we have to make. And Baba is giving us this time to make it before all these supports crumble anyway. We know that we're at the point of the cycle where it's the end of the Iron Age. And the end of the Iron Age means destruction. And destruction means the ending of all the supports. So all of these things have to go anyway. Even on a limited level where a soul leaves the body, that's a destruction, isn't it, as well? So anyway, we have to leave these things. But Baba is saying that there's difficult times ahead. And if you develop this stage of yoga from now, when climate change occurs, when the wars happen, when civil war happens, then at that point you will be a Mahavir. So Mahavir, it's one of the names of Hanuman, the brave warrior, the great warrior. Veer, V-E-E-R, that means warrior. And Maha, M-U-H-A-A, that means great, the Mahavir. So Baba is saying that this is your destination. That's why you are developing your yoga power from now. Your yoga power has to be such that it subdues the vices. Each of the vices have a drive of intoxication that we get swept up in, and our intellect's judgment then is clouded and influenced by that intoxication of vices. So Baba is saying that now you have to subdue those vices completely. You have to subdue the impulses of the sense organs. And so Baba is giving us this opportunity to develop our connection. Mama and Baba developed this yoga power very quickly, and so they just controlled their mind and their sense organs, and this is how they developed that stage of one strength and one support. So we have to follow them in this. And one thing that Baba was saying on Tuesday in the Bhog message was how it was so necessary for Brahma to achieve this avyak stage, because that's then enabled all of you children to move forward, but also that all souls of the world can receive attainments. And in today's blessing, Baba is reminding us that real transformation is the transformation of feelings. Until we've changed our feelings, then we haven't really changed. So if we're hanging on to mixed feelings towards people or towards ourselves, towards our past, towards anything, anyone, then that's part of the human self. And through the power of knowledge and the power of yoga, we have to transform our feelings. And it's only as Baba has transformed his feelings and made himself angelic that it's helping us to change. So Shiv Baba and Brahma Baba have very, very pure and elevated feelings for everyone, and that's why they are able to change us. So Baba is saying that this is something you also have to do. You have to fill your feelings with great elevation, with elevated attitudes, with pure belief. And as you do that, it will actually change the feelings in other souls. So let's experiment with that as well. And then Baba was very, very enthusiastic about service, and he was very tireless, and he made the daddies very tireless as well. And you're hearing that narrative in the Murli. And when Daddy Janki read this Murli in London many years ago, she used to talk about this kit bag that Baba had made of
12 pictures. And she was living, you see, when they were all in Karachi, then they were living fairly comfortably. Baba had bought several bungalows, quite large houses, and they were living comfortably there. But when they moved to Mount Abu, it was a time of simplicity and austerity. And then when they started centers, it was really very simple. They didn't have anything. So the donations that Daddy was getting for the center there, they were just about covering the rent and basic expenses. So when Baba had this set of pictures made, she actually didn't have enough. It was 12 rupees for 12 pictures. And so Baba is saying in the Murli that if someone can't afford it, he will send it. Now, she was determined not to accept this, because the thing about Brahma Baba was there's no such thing as a free lunch. There's a saying in English, I don't know if you have an equivalent saying in your countries, but it's like when something says it's free, you're always paying for it somehow. And it's never really free. So Daddy used to chuckle that with Baba, nothing is ever free. He always pretends that he's giving you everything for free and he doesn't want anything. And then he says, you got to do this, and then you got to do that, and then you have to do this. But I don't want anything, but then you got to do this. So she used to chuckle like that about this. So she knew that if she asked Baba, then Baba would never forget that he gave this for free. So he would be like holding it over her and saying, so, have you done your service? So she didn't want to ask Baba for this. And then once she was talking with Baba, and of course, what do you think he asked her? Daughter, have you got this kit of the pictures? So then she said to Baba, no, I haven't got it. And so Baba said, why can you not purchase it? So she said, no. He said, oh, don't worry, Baba will send you a kit for free. And then what do you think happened? Every time Baba wrote to her, daughter, how's the service going with this kit that Baba sent you for free? How many people have you explained it to? How many people are coming? You're not just sitting there, Baba sent this to you for free. You're not just sitting there doing nothing, are you, daughter? So Daddy used to chuckle that this is what Baba was like. That he was very, very active, and he made you very, very active. So the daddies, they prepared the food by their own hands, they cleaned everything by themselves, they went and did all this service, they ran the classes, they really worked very hard indeed. Shanti.